Hey everybody, it's Aaron Ozy, author of the best-selling children's book Regulus and producer and director of the Regulus movie. Hey guys, what's up? My name is Eden Cupid. The Wizarding world exists parallel to the Muggle world, albeit hidden in the secrecy. His magical ability is inborn, and children with such abilities are invited to attend exclusive magical schools that teach the necessary skills to succeed in the Wizarding world. Harry becomes a student at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Hello, Prajakta ma'am. Am I audible? Hi, hang on one second. I'm just going to. Hi, yes, you're audible. Can you hear me? Okay. Yeah, I can hear you. Perfect. How are you, Siddhant? I'm good. How are you doing? Good. Great. Thank you so much for joining. No, thank you so much for having this. It's so exciting. Yeah. And now I'm forwarding this conversation to Aniket, and he has some fun questions to ask with you. Good evening, ma'am. That I kind of saw the films before I read the books because then I knew exactly who looked like, each character. I knew exactly how Hagrid looked. I knew exactly how Hogwarts looked. I knew exactly what the flying car looked like and what color it was and what noise it made. It was funner for me to then visualize. I knew what the Ministry of Magic looked like. So a lot of that happens in the books happens in the Ministry of Magic, and you don't really see as much in film. So I think it was I can never really choose, but if I had to, I'd go with books. It's really interesting, ma'am. So, who is your favorite character in Harry Potter and why? I think my favorite character, two characters actually. Actually, how to choose? I love Luna Lovegood. I think she's amazing. It's amazing how she's in her lane and she's living her life, but she's such a nice person, such a sweet girl, so helpful, and so comfortable in her own skin. Like she's very proud of who she is, and I think that's wonderful. I also have a massive crush on Sirius Black. That's great, ma'am. So, what do you like more, Harry Potter films or reading Harry Potter books? I think, like I said, both of them have personally for me been beautiful experiences. But if I had to choose, I'd choose books. Yeah, that's quite interesting. So, ma'am, what do you like about Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry? Oh, what do I like about it? Ever since I was a kid, I've always wanted to go into those massive dining halls and eat there. All the food always looks so good in those halls. Uh, and I always want to sit on those really long tables. And I think everything about Hogwarts. I think the concept as in itself, how there's no sort of how there's no barrier to imagination when you're at Hogwarts. Anything can happen. I think that is what I like the most about that school. That's quite interesting, man. I always had good bumps that somebody could just travel me to the fantasy world that I've always loved reading. So ma'am, now we are handing over this session to one of our special guests, Mr. Rajesh Kava. Hello, hi guys. Hi. Hi. Oh, hi, मैं दिख रहा हूँ? Hi, Hanji. जी, हेलो प्राजक्ता जी नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते, बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ और थैंक यू सो मच सिद्धांत और अनिकेत हमें यहाँ लाने के लिए, ये चीज़ करने के लिए जो कोई नहीं करता आमतौर पे, इंडिया में तो नहीं, और आपने ये करने की हिम्मत की और ये कर दिखाया, वाकई ये काबिल तारीफ है, उसके लिए थैंक यू सो मच। प्राजक्ता जी आपको कौन नहीं जानता, आपको तो सब जानते हैं और मैं मुंबईया हूँ, मैं तो मुंबई छोकरा हूँ, तो मैं भी आपको जानता हूँ। थैंक यू तो
शायद आप मेरे बारे में नहीं जानती, तो मैं बता दूं कि आई एम द ऑफिशियल हिंदी ऑफ हैरी Of पॉटर। Harry Potter, हाँ जी। I'm a little bit of a Harry हाँ, Potter geek. I knew this. यस यस यस। तो वाकई बहुत अच्छा लगा, और मैं तो चाहता हूं कि ये इवेंट हुआ है, वैसे आप भी अपने चैनल या इंस्टाग्राम से कुछ चीज प्रमोट कीजिए। हैरी पॉटर या तो फिर वॉइस इंडस्ट्री को, वॉइस एक्टर्स को, ये बहुत ही पर्दे के पीछे छुपी हुई जो चीज है, जो हर घर में है। वो मतलब एनिमेशन बच्चे देखते हैं, इंफोटेनमेंट चैनल्स बच्चे देखते हैं, इंग्लिश टू हिंदी मूवीज, साउथ टू हिंदी मूवीज, सब कुछ देखते हैं। तो वॉइस एक्टर्स को लेकर कुछ करते हैं, आप सोचिएगा, मजा आएगा, है ना? Thank you so much, sir. या Thank you so much, Projector थैंक ma'am, for with us for the event. Followed by a few words from the current headmaster or headmistress. The banquet started after this, including large quantities of food and drink. When there was a feast to celebrate the beginning of the Treviso tournament, Hogwarts had in its faculty an abundance of wise and talented professors. Each specialized in a specific subject. Other staff positions included that of a school nurse, caretaker, librarian, and the keeper of the keys and grounds Hogwarts. There were a variety of classes taught at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Hogwarts is divided into 4 houses, each bearing the last name of its founder: Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw, and Helga Hufflepuff. Now we have Rajesh Kawa. Rajesh Kawa sir, आपका स्वागत है। Full power. Full power. All you talented people in the house. Full power. यू सो मच सिद्धांत, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो आपके बारे में मैं थोड़ा ऑडियंस को भी बता दूं आपने क्या क्या किया है। जी। तो ये राजेश कावा जी हैं और इन्होंने काफी मूवीज और फिल्म्स में काम किया है डबिंग का। थैंक यू सो मच। और पहले तो मैं दाद देना चाहूंगा, वाकई ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छी ये पहल की है वाकई, और इस तरह के इवेंट इंडिया में होते रहने चाहिए, तो कांग्रेचुलेशंस गाइस। थैंक यू सो मच। जी। तो मेरे पास कुछ काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप ही ने की है हैरी पॉटर की डबिंग, तो इससे अच्छा जवाब कोई और नहीं दे पाएगा इसका। जी जी। तो आपका हैरी पॉटर में डबिंग का काम कैसे मिला, मतलब आपको कैसे मिला वो? हाँ, पहले मैं बता दूं जो भी देख रहे हैं उन सबको कि कभी किसी फिल्म के लिए या सीरीज के लिए जब हम कोई काम शुरू करते हैं, उससे पहले ऑडिशन होता है उस कैरेक्टर के लिए, पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, और वो जाता है वार्नर के जो हेड ऑफिस, जो विदेश में बैठे वहाँ, तो इंडिया वार्नर से वहां जाता है और अप्रूवल के लिए, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। आखिरी 3 पार्ट में मेरी आवाज है, 6, 7, 8, और 6 हाफ ब्लड प्रिंट्स के टाइम पे कुछ वजहों से उन्हें जो पहले कर रहे थे वो आवाज बदलनी थी, तो मुझे बुलाया गया। और मैंने जब ऑडिशन के लिए मैं गया तब पता चला कि 3 अलग अलग सीन हैं जिस पर मुझे ऑडिशन देना है, जो तीनों के अलग अलग मूड हैं। तो तीनों अलग मूड के हिसाब से एक्टर को वो लोग भापते हैं, समझते हैं कि आवाज क्या, परफॉर्मेंस क्या, लैंग्वेज क्या। तो मैंने तीनों सीन के ऑडिशन दिए थे। मैं जब दे के निकल गया तो हम आर्टिस्ट आमतौर पे वही जैसे काम के लिए ऑडिशन देते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अच्छा सा दिया था। फिर लेकिन बहुत सारे वॉइस एक्टर्स का ऑडिशन लिया गया था। लगभग मैंने सुना था कि 12 या 14 वॉइस एक्टर्स का, 12 to 14 वॉइस एक्टर्स। तो 8 दिन के बाद मुझे मैसेज आता है, SMS, कि कांग्रेचुलेशंस, यू आर द नेक्स्ट वॉइस ऑफ हैरी पॉटर। तो ये सबसे बढ़िया SMS रहा होगा। हाँ, तो ये जो पढ़ के जो मैं ठहर गया, मैं कहीं तो वॉक कर रहा था सड़क पे, किसी स्टूडियो पहुंच रहा था, तो मैं अटक गया। मैं ये क्या है, ओ वाह वाह वाला जो वाव आया ना वाकई, और ये बहुत ही गजब वाव था।
तो बस भी, लेकिन मैंने हैरी पॉटर की फिल्में इतनी देखी नहीं थी, मैं उतना बड़ा फैन नहीं था तब तक। फिर मुझे वेंडर जो है प्रोड्यूसर, उन्होंने बताया कि आपको फिल्में देखनी पड़ेंगी, पहले की सारी फिल्में देखी मैंने, ध्यान से देखी दोबारा, मुझे डीवीडी दी गई सारी फिल्मों की, देखी मैंने सारे कैरेक्टर के साथ हैरी पॉटर का क्या बिहेवियर है, क्या कैसे बोलते हैं वो, सबके साथ क्या ट्यूनिंग है, वो सब कुछ देखा, स्टडी किया। उसके बाद हमें फिल्म दिखाई गई पूरी, रिलीज के पहले फिल्म दिखाई गई और फिर हमने डब किया। तो ये वाकई बहुत ही गजब एक्सपीरियंस था। और मैं बहुत लकी समझता हूँ इस चीज को लेकर कि आखिरी 3 पार्ट, सिद्धांत, आखिरी 3 पार्ट मतलब जब वो मच्योर हो गए पूरी तरह से, स्टोरी भी बहुत गजब जा रही थी, एज एन एक्टर भी वो काफी कुछ अच्छा कर रहे थे, तभी मुझे उनको डब करने का मौका मिला। और आखिरी 2 में, जैसे कि लास्ट वाले में तो माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है, तो ये सारी चीज मुझे करने को मिली, उन्हें करने को मिली, इसलिए मुझे करने को मिली, ये हो गया। आप थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में भी बताएंगे, मतलब आपका डबिंग कैसे होता है शॉर्ट में, ताकि नॉर्मल लोगों को भी पता चले कि डबिंग में क्या क्या चीजें होती हैं। जी, डबिंग में ये होता है कि आपके पास ये तैयार अंग्रेजी फिल्म तो है, अंग्रेजी फिल्म, वहां पिक्चर का वो बड़ा पर्दा होता है, पर्दे पे चलती है वो फिल्म, उसका वहां साउंड म्यूट होता है और उसका साउंड आता है आपके कान में हेडफोन में। तो सामने वीडियो है, कान में हेडफोन्स है, उसमें वो ओरिजिनल लाइंस जो है इंग्लिश में, वो उसको हम पायलट कहते हैं, तो पायलट के तौर पे वो आवाज आती है, सामने वीडियो है, हमारा हाथ में ट्रांसलेटेड स्क्रिप्ट होती है जो डायलॉग्स लिखे हैं, तो वो देखना है, पढ़ना भी है और सुनना भी है, परफॉर्म भी करना है। तो ये सारी चीज, वो जैसे वहां से शुरू हुआ तुरंत उसको पकड़ के हमें पढ़ना है, कहाँ पॉज लिए हैं, कहाँ हंसना है, रोना है, कहाँ अटकना है, सब कुछ पॉज, एवरीथिंग। तो ये एक प्रोसेस होता है जो पहले हम सीन देखते हैं ध्यान से कि यहाँ इन्होंने बोला है, ये पॉज, यहाँ स्मर्क है यहाँ छोटी सी स्माइल, लाफ्टर, ये सारी चीज हम पॉज मार्क करके तैयार, 1 बार 2 बार सीन देखते हैं, फिर टेक करते हैं, और यही रीत होती है, आपको ध्यान से सीन समझना पड़ता है। और ऐसे ही अलग अलग, आपको बता दूं कि अलग अलग एक्टर्स, वॉइस एक्टर्स, अलग अलग किरदार की अलग अलग डबिंग होती है। जैसे मैंने हैरी पॉटर, बाकी हरमाइनी अलग, रॉन वीजली अलग, सब सब सारे किरदार अलग अलग तो मतलब आप लोग एक साथ नहीं करते हैं, ये पूरा अलग होता है? यस, अलग अलग होता है। उसके बाद सारे ट्रैक्स मिक्स होते हैं साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक के साथ। ओके, तो अब आपसे थोड़ा डबिंग परफॉर्मेंस की बारी है, तो मैं सेटअप कर देता हूँ अपने एंड पे ना, और मैं आपको बता दे रहा हूँ जब शुरू करना है। यस यस, डेफिनेटली आई एम रेडी, और मजा आएगा। तुम सही थे जब तुमने प्रोफेसर स्नेप से कहा था कि ये छड़ी तुम्हारी बात नहीं मानती, ये कभी नहीं मानेगी। हो सकता है ये छड़ी कभी स्नेप की रही ना हो सकता है इसकी वफादारी हमेशा से किसी और के लिए रही हो। चलो अभी इस खेल को वैसे ही खत्म करते हैं जैसे शुरू किया था, एक साथ। दिन याद दिला दिए जब मैंने ये फिल्म डब की थी, लगभग 2011-12 में, लास्ट फिल्म डेथली हेलोस 2। तो आपने कुछ और भी कैरेक्टर्स डब किए हैं, जैसे कि जग्गू बंदर फ्रॉम छोटा भीम, जी जी, एंड कियो फ्रॉम निंजा हथौड़ी, और डेडपूल में भी आपने एक कैरेक्टर को डब किया, तो थोड़ा उनकी भी आवाजें हो गई। जी जी। जो जग्गू छोटा भीम का बहुत लोकप्रिय है, वो मैं ना जग्गू बता रहा हूँ ढोलकपुर से, मैं ना सबको लड्डू खिलाऊंगा, बहुत 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 लड्डू, जकन जकन जकन। तो ये तो एकदम विपरीत अलग ही आवाज है, मेरी आवाज से भी, हैरी पॉटर की आवाज से भी पूरी तरह से। और ये मैं कर रहा हूँ छोटा भीम 2008 से कर रहा हूँ जग्गू जी। तो और कियो फ्रॉम निंजा हथौड़ी लगभग सेम टेक्सचर है, लेकिन हाँ वो नटखट है ज्यादा। तो अमारा एंड कियो। ओए 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 कियो, क्या कर रहे हो? अरे वो देखो, जब देखोगे तब पता चलेगा ना, सोते रहते हो पूरे दिन, खाते पीते।
टिडिंग टिडिंग हमारा बॉस, मैं सोते सोते भी जासूसी करता हूँ, अभी जाके देख के आता हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं। टिडिंग 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 हमारा बॉस। काफी बढ़िया था ये। जी जी जी। और अभी ये मतलब अगर ड्रैगन बॉल जी आप फैन रहे हैं या आपने देखा है तो डीबीजी, उसका मेन विलन ब्रॉली ब्रॉली, वो भी मेरी आवाज, और वो पूरा मॉन्स्टर टाइप, फुल पावर आवाज। ताकत, हिम्मत, शक्ति है मुझ में, मुझे हरा के दिखाओ। तो ये बहुत ही पावरफुल विलन फ्रॉम डीबीजी, और पूरी तरह से एकदम विपरीत कैरेक्टर फ्रॉम तारक मेहता का छोटा चश्मा, अभी अभी लॉन्च हुआ है, जो आई एम प्लेइंग जेठालाल, एनिमेशन जो वर्जन है, एनिमेटेड वर्जन। तो उसमें जेठालाल, मतलब वो जो एक्टर हैं जेठालाल, दिलीप जोशी, उनको कॉपी करना वाकई मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने एनिमेशन वाले रूप में जो हो सकता है उतना कोशिश की है। बबीता जी, बापू जी को मैंने बोल दिया है, हो जाएगा, उसमें कोई वो बात नहीं है। बबीता जी, वो कबूतर कैसा उड़ता है ना, तो ये जोन जेठालाल जी का। और आपने डेडपूल में भी एक कैरेक्टर डब किया, तो उसको Yes, भी yes. जरूर सुना दीजिए। Yes, yes, Deadpool, Dopinder from Deadpool. पुल भाई लाइफ हो तो तुम्हारे जैसी हो, पुल भाई, बाकी तो कुछ है नहीं है, नौकरी है तो तुम्हारी जैसी हो, छोकरी तो तुमको अच्छी मिलती है। पुल भाई, मेरी भी गर्लफ्रेंड थी पुल भाई, दीपा, जो मेरे को छोड़ के मेरे कजिन के साथ भाग गई, उसको दोनों को मैंने डिक्की में बंद कर दिया है। पुल भाई, कुछ अच्छा करो ना पुल भाई, मेरे लिए भी। काफी बढ़िया लगे आपके सभी परफॉर्मेंस। जी जी, थैंक यू सो मच। और आने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की चीजें आप करते रहिए और लोगों को जमा कीजिए, ताकि एक जो पीढ़ी, एक जनरेशन हैरी पॉटर के साथ बड़ी हुई है, उनको पता चले कि लोगों को पता चले, आज की जनरेशन को पता चले कि वो क्या चीज है, और वैसी चीज दोबारा बनना फिलहाल नामुमकिन है। ऐसी कोई फिल्म नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं आ रही। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू टीम, कीप शाइनिंग, ऐसे ही अच्छा काम करते रहो। The leaky cauldron was present long before Charing Cross Road was even planned in the 19th century. Its true address is number 1, Diagon Alley, and it is believed to have been built sometime in the 1500s. Diagon Alley is a high street located in London. It is accessible to the wizarding world, to which it is something of an economic hub, but hidden from the Muggles. The first stop was at the Potter Vault. Then they continued their journey to the higher security vault 713, where Hagrid caught the Philosopher's Stone. After getting money from the bank, Hagrid helped Harry shop for his school supplies and purchased his 11th birthday gift, the Snowy Owl Hedwig from Aelop's Owl Emporium. So the person that we're going to have with us now is Mr. Urfi Lamba. He is the brand ambassador of Asterix Studies. He's an actor as well as a producer. He has worked in films such as Sing is Bling with Akshay Kumar and directed by Prabhu Deva. That's starring Akshay Kumar. And he has also worked in Slumdog Millionaire. Okay, hello Arti sir, thank you so much for joining. Hi everyone, hi. Thank you, Siddhant. Yeah, can you please turn on your video? Yeah, now good. Hi Shika. Yeah. Hello, Urfi sir, how are you? Very well. Hi Aniket. Yes, sir. What's up? How's quarantine been for you guys? Terrible. I can understand. If I was in school and college, I would feel the same. But we're missing college years, missing time with friends and everything. We are stuck in the exact same hometown that we tried to escape. Yeah, no. This too shall pass. We all need to be careful. A third wave is expected, and just some more time. How have you been hanging around? Pretty good. We've been working. We are developing a show for Disney Hotstar, and that's kept the clock in us going. That's been
but like everyone else, we're tired of sitting and working from home. You need that personal touch. You need to meet friends. You need those hugs that you've been missing. It's been, but I guess some more time, and then we all should be. Let's get vaccinated and get over it. So have you gotten vaccinated? First dose, 1 dose done, and Same thing. just opened that lock and got the first dose done. But so, yeah, Siddhant. So Harry Potter book night, the first Harry Potter book night from India, is it? Yes, and you are part of it. Congratulations for all of you. Yeah. Okay, so now we have some wonderful questions which Ishika will be asking you. Oh, sure, please. So, okay, sir, how old were you when you first started acting? Like, how has your journey from being an actor to a producer been so far? I mean, I'll be very honest. I was a very shy kid. I was never supposed to be an actor. I was never the guy who went to stage dramas. And I had stage phobia. I remember the first speech I gave in my college, and I prepared for 3 days, just one paper. And then by the time I reached stage, I forgot it. I had to again go and read it from the paper, you know. So I don't know from where. I think everybody in India wants to be an actor. All of us dream when we look at our stars on the big screen, you know. We all have this thing that, you know. All of us are fans. And one thing led to another. I was working as an engineer. I worked for 2 years in Delhi, and then I quit my job. And Slumdog was the first small passing part, blink and miss part that I did. But that kickstarted everything for me. And then Fugly happened, Prague happened, Sing is Bling, Gift. While doing all of this, I realized that, you know, Bombay is a very, very expensive city. It's a city of dreams, but to survive in Bombay, you need to make money. You know, either you depend on the family, which I did for some time, and then suddenly, you know, my parents were like, "Ye वापस नहीं आने वाला hai." Cut his money strings, and then he'll come back. But the moment I realized that the family support has stopped, then I started producing. Then I started getting into some other things, hoping that, you know, producing was like acting was not a natural, quick choice. It's not like I wanted to be a producer. Mm-hmm. But I had to survive in Bombay. I started doing production, slowly learned the tricks of the trade. We started this company that's doing pretty well now. Hopefully we are doing good with the company. One thing led to another, and, you know, here we are. I think it's more importantly, I wanted to be in the field of arts, in making movies and being a part of movies. And that one passion and one dream led to everything. You know, I never wanted to give up that dream. To be in Bombay, to do movies, to produce, to act, to be part of every process that finally makes a movie come alive on screen. So do you have a thing for science fiction or Oh yes, who doesn't? I think, you know, 50 years, 80 years back, say, going to moon was science fiction. We've reached moon. Now, parallel forms, there could be more to life. The meaning is different. The matrix, all of that it's wonderful and fascinating. But some of that we will reach, you know, if not in our lifetimes, the next generation. So I think I feel science fiction as a way to explore life is fascinating, is imaginative, is what we artists do all the time. Also, I feel that, you know, as of now, even if now, you know, we show that we are in 2050 or we are in some other world in parallel universe, you know, we all come back to realize that the basic desires and needs of human beings are same. Whatever you become, it's the truth, it's lust, it's those 7 sins and those 7, good things that you do, kindness, mercy, that revolves around in any world. So I think yes, sir. It's amazing and awesome. You know, I remember this is resonating with me so well. I mean, this is hitting some other note I cannot explain. No, I'm not even hitting this out. Yeah. We all feel the same, yes. You know, I watch Harry Potter. Harry Potter movies are one of my favorites. Magic has always been Hobbit, Harry Potter, Lord of the Rings. I can watch these movies any number of times again and again. So do you have a favorite character from Harry Potter? Can you choose, like, if you had an option? It's Harry Potter. It's you all want to see yourself in there. Let's change the question. If you could be one of those characters, if you could be one character from Harry Potter, like, you know, not play the character, but if you would be a character from Harry Potter, which one would you like to be? So definitely Harry Potter, nothing else. But I tell you one thing, you know, I'm forgetting the name of you know, there's a scene of Expecto Patronus. There's a scene when Harry Potter is being those Dementors, they're coming and sucking life out of the guy.
and Yes. he is waiting for his father to come on the other side and save Father him. to come, yes. Yes. Yeah, but actually, when we go back further in the movie, we It's realize not his father, it's yes, him. he comes back and saves himself. You know, the whole point of life is that you are your own savior and you are enough. Harry Potter teaches you so many things in so many different ways. Why not do the hero's journey, you know? Yes. Like, yeah, So, sir, do you read often? I read a lot. I What kind of literature I are used you to read into? a lot. I used to read a lot. Okay. All books from fiction, non-fiction. Right now I'm reading Do the Work by Dr. Nicole LaPera. And then all-time favorite is, you guys are pretty young. Once you, maybe 2 years down the line, you should read Love Story once. Even if you never fall in love, you experience a whole love. I've read Love Story multiple times in fiction. So, Gone who with is the Wind the was a book that I started with. Sorry. writer कौन है? Eric Segal. Okay. Thank Then you. Gone with the Wind was the book from where I started reading. Okay. And then there are wonderful books that I fall back on all the time. You know, there's this book called Checklist Manifesto that I think it's not about just making checklists in life. There are checklists which are permanent, things you keep on transferring to things that you need to remember forever. There are checklists which are about to-do lists for the day-to-day work. There are checklists which are goals, which are short-term goals. Then there are checklists which are your dreams, which are like 10 years, 20 years down the line. Lists are very important in life to organize yourself. So I would say that now that you asked me, I would say everybody should read Checklist Manifesto once for sure. Okay, so that was going to be my next question. Like, would you like to suggest something to the young generation, like some books to the masses? You have already answered the question. Sorry so if I I'm- don't think that's necessary anymore. No, and then I would say go for comics. There are these wonderful artists all over the world. Also there's a new form of books that have come up. Which are journalism as animation, where you get all this work, where you can understand the problem of Jerusalem, of what's happening in the world. Yes, they're all over on Instagram. Yes, you should check those out. Thank you, sir. It's so lucky to have you here today. I mean, you were such a pleasure to have. Thank you so much. It's a pleasure for me to come here, and I wish you all the best for your Thank you so event. much, okay, sir. And Siddhant, keep it up, man. Keep doing things which are firsts. Yeah. Thank you so much for joining. No, you all are welcome. Thank you so much for having me. All the best, and we connect soon. Thank you, guys. Thank you, sir. As dangerous as a Chimera, as rare, the manticore is reputed to croon softly and it devours its prey. Its skin ripples almost all known charms and stings causes instant death. We have a lot of fun activities for the fans of Harry Potter books and movies, and such activities that include house bookmarks that we have a small clip of actor Eddie Redmayne, who will read his favorite passage from the first book in the Harry Potter series, that is Harry Potter and the Philosopher's Stone. I'd like to read you my favourite passage from this truly enchanting and incredibly magical book. A breeze ruffled the neat hedges of Privet Drive, which lay silent and tidy under the inky sky. The very last place you would expect astonishing things to happen. Harry Potter rolled over inside his blankets without waking up. One small hand closed on the letter beside him, and he slept on, not knowing he was special.
not knowing he was famous, nor knowing he would be woken in a few hours' time by Mrs. Dursley's scream as she opened the front door to put out the milk bottles. Technical error. Nor is that why he would we spend cannot the hear next the few clip, weeks being but, prodded and pinched by his cousin Dudley. He couldn't know that at this very moment, people meeting in secret all over the country were holding up their glasses and saying in hushed voices to Harry Potter, "The boy who lived." So we have a musical performance by singer Sonali Mahapatra. सुबह फीकी शाम से